that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. The executive council of the... We had 20 days, and at the same time, your lordship remembers, round about that time, your lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment at your lordship. What was the date? I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, your lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry. 2nd of December. These elections, your lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order. It was 18th of December. So, your lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us. That these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, your lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd/12/2023, in which two things happened. Number one, the intra-party election was declared void. It was set aside by ECP. And then
on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22/12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So, it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspect, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, a valid election being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever other requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be
if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections here as irregularity or their irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rule and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases, unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. Absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper. I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general. So, every election, everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains. But you see the general... Broader picture. So, you understood what I... I have fully understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, we start
start with the facts first, then we come. If we can just start with 14 members and destroy my scheme of arguments. I'll Okay, be fine. concluding. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में. जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीकेकार पेज 90. जी. हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया. जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर. जी सर. ये वही है 29/11/2023. ये हो गया जी 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख पहली तारीख. सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. जी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी 1/12 ही है. जी. फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी. Right. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी. Right. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी. Right. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, हाउ टू कलेक्ट द फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म, वेयर द नॉमिनेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड, बिकॉज आई ऑल्सो आस्क्ड द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव. आई थिंक इट इज मोर देन 8,50,000. जी. तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, बाय सिंपली सेइंग. अब आपकी 15 कंप्लेंट वहां गई हैं ईसीपी में. जी. ईसीपी में सो मोटो नहीं है ये एक्शन. जी. somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP so moto. आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे न्यू आई है कि 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहां पे. तो अब उन्होंने देखा इन सब चीजों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था. आई अंडरस्टूड द पॉइंट. आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना. जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिले कि जो करना चाहता है इलेक्शन, जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना. मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं. और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है. उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवाल उठ रहे हैं. बिल्कुल ठीक है सर. मैं आई गॉट दैट. You may ignore with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate. Because every election we will find some more this particular form not submitted, that thing not done. Okay, we will be charitable there. ठीक. So your lordship, coming back to my point, so एक ऑर्डर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था. दे हैव नॉट पॉइंटेड आउट एनीथिंग इन द मैनर, बट आई विल स्टिल सेटिस्फाई द कोर्ट जो आपने पूछा, लेकिन दे हैव नॉट पॉइंटेड दिस आउट. दे हैव सिंपली सेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द फेडरल कमीशन. सो दे हैव नॉट क्वेश्चन कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह. सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट के as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly, but for the time being the order does not say it. Now your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन, वो तो हमने नोट कर लिया जी. आप प्लीज. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी. But the symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that.
When you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं। बहुत पहले जा सकते हैं, at least when I was I mean we can go to Ayub Khan and all that, वहाँ से भी जा सकते हैं, but जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन recent memories and those political parties which exist today, let's put it this way, the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol तलवार, फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया, फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things, then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any action will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that from a timeline point of view that will be very important, because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then how did they know then, when the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I've repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. So, दरअसल आप ये malafide का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको substantiate कीजिए. Because it changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments, Your Lordship. As always, there's no point in bringing, although it's a political
it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the mala fide in fact in law, I will be more relying on procedural mala fide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of mala fide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word mala fide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of. So you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying mala fide. I'm not saying mala fide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I am not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case and it's basically all about symbol. Relevant page? I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, 1 second. Maybe I at least the fundamental question is if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was then taken away. You can't just deprive someone of their symbols, but here it is connected with the party elections. My point because is certification. Suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will... No, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं करो, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आएंगे जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौकिफ है, और ये इसको गायब भी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए.
आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इनसे वोट इनको, हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना। अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं। आपने पिशावर का तो जिक्र किया मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है। तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, आई विल सेटिस्फाई दैट। ECP की ऑर्डर में भी दे हैव लेकिन सर्टेन वायलेशंस ना, नॉट ओनली वायलेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट, there are certain violations. Not If you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो टोटल कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually they have taken a very serious point on this, and ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1, नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3। paper book. Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also failed to find here in PTI Constitution any provision that chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. 26. Going through the above mentioned clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution
2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा. आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन के आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपके शेड्यूल जबर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना जी. आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तो अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहे हैं तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं.
मे बी ही वांट्स बी चेयरमैन, मे बी ही वांट्स बी व्हाटएवर सेक्रेटरी जनरल। हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं, उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें। और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था। कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज। तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे। तो ये हमारा मसला है। आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया। मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ से, मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया। दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये जो जजमेंट इज इम्प्यून बिफोर अस हैज आल्सो नॉट गॉन इनटू दैट। ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस। से दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो ये कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया। यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट, I am. देन यू हैव टू शो फ्रॉम डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ दैट That is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूं, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो देन तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी इलेक्शन कमीशन। Exactly. That is your lordship what I am exactly that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाता है। पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना, तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे। अब आप एक जजमेंट, अब बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट है, हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं। जो अगर आप कोई खास मखसूस पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं, खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आपको। जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट। ठीक है, ये इलेक्शन में देखना ना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं वो भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे। जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक जगह है नहीं, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपकी केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन ही तो इलेक्शन कमीशन का काम है। में तो जुरिसडिक्शन नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ। देयर इज नो जुरिसडिक्शन दे है। थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये दो तो सिविल कोर्ट के मामले हैं, जब मेंबर्स के आपस में बैकअप कीजिए ना इस बात। मैं कर रहा हूँ सर, बट इफ आई कैन प्रोसीड। 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर हाई कोर्ट का। इसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, द पिटिशनर्स हैव क्वेश्चन द इम्प्यून ऑर्डर ऑन लीगल एज वेल एज फैक्चुअल प्रीमाइस। हाउएवर वी आर माइंडफुल ऑफ आवर jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट से जो इम्प्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना, फिर तो मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। रोल नहीं है। आई विल शो दैट। कैसे रोल नहीं है फिर? वो फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है, दैट इज जिक्र है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे, जिक्र है कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो भी करना है, और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन लुक इनटू दैट एंड से कि सजा होनी चाहिए या नहीं। इट इज द क्रिमिनल कोड दैट हैज द जुरिसडिक्शन। सो एवरी स्टेटमेंट इन द लॉ नीड्स अ जुरिसडिक्शन। सेक्शन 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन
कराएंगे आप? लेट मी कम टू माय फर्स्ट पॉइंट देन। हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पिशावर ठीक है, अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि सामने वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल, वो तो एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को मिलना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ तो जाती है। मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल। सिंबल तो लिया हमसे। पिशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना सर। नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन हमने कराए। मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले लेंगे। Question is, can they take the symbol for non-election? नो, Even if I don't hold election? नो, बट यू हैव एक्सेप्टेड दैट लेटर ऑफ ईसीपी। आपने उनको कहा Letter does not confer jurisdiction, sir. नो, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं। उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। इन्होंने आपको धमकी नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी। बेशक इलेक्शन कराना लगे, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप सही तौर पे नहीं करा रहे इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गए पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है। फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया। हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो क्या भी उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने आऊंगा, वो भी ग्राउंड है मेरी, डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो इधर से आगाज करें शुरू से। हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। ये तो ये कहने से तो नहीं होगा, कानून का Let us start, sir. Let us start with the Constitution. ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन। बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। राइट सर, शुक्र है। So let us start with sir the Constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is Article 218। ECP को बनाया गया आइन के तहत फॉर सर्टेन पर्पस, एंड जो रेलिवेंट उसकी 218(3) में ड्यूटीज दी गई। 218(3) में जी और ये कहा गया कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की। बिल्कुल, ये जो बात है ये आता है 219(e) में, ठीक है। सो 218 ये स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं। ये आ गया 218(e) के जुमरे में आ रहा है कि सच अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो योर लॉर्डशिप पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस। So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219(e) 218(3) doesn't. Constitution doesn't, right? Pakistan जो है can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 बल्कि उल्टा कहता है कि अगर सर्टिफिकेट्स दे दिए under 209 and the other sections, तो फिर आपको वो एलिजिबल हो जाते हैं।
So there is no reference to section 208. There is no reference to anything else. अगर लेजिस्लेचर ने कोई ताकत देनी होती टू द ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें तो वो 2151 में कह देते या 215 में किसी और जगह कह देते। अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि वेयर अ पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सेवरली और कलेक्टिवली फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 209। यहाँ लिखा है कि फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 209। This is my problem. Which means that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ certificate की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed that What is the 209 certificate? The elections have been to held. the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to सेक्शन be kept in 204 mind. शो कॉज नोटिस टू दैट लिमिटेड एक्सटेंट कि अगर मैंने सर्टिफिकेट ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिडिक्शन नहीं है। सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया। और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने सर? में अगर आप पढ़ें 209 में पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 209 only. 210, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain तो सर यहाँ ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशन हूँ, इतना ही मैं वो हूँ ऑब्लिवियस टू द लॉ कि मैं सर्टिफिकेट ही नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे। नॉट एनी इरेगुलरिटी। फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दे दूं तो कंप्लायंस हो गई। मैं इसके बरक्स बात कह रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट आप ना दे पाए, कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, वो ठीक है। आप कह रहे हैं कि नहीं सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म जी। मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है। सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए जी, वो आप हमें दिखा दें इलेक्शन हो गए, बस इतनी सी बात है। वो एक कागज का टुकड़ा अक्कासी कर सकता है, वो कुछ और अक्कासी कर सकता है। वो ना भूले हुए आप ना भी दिया होता आपने सर्टिफिकेट तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती। असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूँ वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है। 2021 से आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन। चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया। अभी आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई तो हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपकी जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी। ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। अब या तो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें। आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है। वो ऐसी बात नहीं, वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं। कानून आप लोग बनाते हैं ना, ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक इलेक्शन एक्ट बना दिया। चले ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए। तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में। अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं। कभी आप एक चीज दिखाते हैं, दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखा दें जी कैश में इसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, तो वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले। मैं तो अभी उस पर आया नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ उस पर, लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखें ऐसे, देखिए अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक। हमने खान साहब को कह दिया था कि आप इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, तो फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे। तो अगर आप हमारे सवालों के जवाब ना दें तो हम सुनते हैं आपको, मगर फिर हमें सस्पेंड
सस्पेंड करना होगा जजमेंट को। हमने सस्पेंड नहीं किया जजमेंट को, इसीलिए बिकॉज आई थॉट कि आपको इसको एंजाइटी होगी कि इसको जल्द फैसला हो जाए। बहुत ये तो अब आप इसको वो हमें सारे जो हमारे जो एंजाइटी है उसको आप अटेंड करें, ठीक है। आप अदरवाइज आप आर्ग्यू करते रहेंगे मगर फिर वो आपके फिर आप ये ना गिला कीजिएगा कि क्यों सस्पेंड कर दिया, फिर वो उसका नहीं करूंगा, ये निकलेगा। ठीक है जी। आई विल गो स्ट्रेट टू दिस। अब मेरा पहला पॉइंट सर खत्म हो गया, विच इज दिस के अकॉर्डिंग टू माय सबमिशन देयर इज नो जुरिसडिक्शन। अब मैं आपका पॉइंट पे आता हूँ, एड्रेस करना योर फीलिंग के इलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक पेपर बुक दी है सर आपको, इसको जी दिए ना, जी आपके सामने होगी सर, ये वाली ना जी हाँ ये आपने फाइल की है ना? जी ठीक है। अच्छा नाउ सर व्हाट हैपेंस इज, मैंने शुरू किया था कि अब 20 दिन में हमने इलेक्शन कराने हैं। तो ये 28 नवंबर को हमारे पास जो पहले जो हमारी एक द वे टू इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में से 2 इलेक्शंस हैं। एक है चेयरमैन का, चेयरमैन का इलेक्शन है, वो सिंगल इलेक्शन होता है कि आप एक 1 अगेंस्ट 1। और जो एक है पैनल इलेक्शन। पैनल इलेक्शन मीन्स कि आप अकेले नहीं आ सकते, आप एक पैनल लेके आएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मैं जनरल सेक्रेटरी। दिखाइए ना चेयरमैन का इलेक्शन दिखाइए जी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये जो पेपर बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं भी नहीं जो आपके इलेक्शन के प्रोसेस के होते हैं, जो कि हम सेटिस्फाई होना चाह रहे थे, वो है ही नहीं इसमें। चेयरमैन का दिखाएं, चेयरमैन लेट्स स्टार्ट विद द चेयरमैन। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ये इसमें पेपर बुक में कहाँ है चेयरमैन का? नहीं, मैं अभी आपको बता रहा था कि इलेक्शन होते हैं एक चेयरमैन का और एक पैनल वो का। हम पढ़ चुके हैं जी, राइट, आप पढ़ चुके हैं। हम आपको टेक्निकलिटी से निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। वो अब मखदूम साहब टेक्निकलिटीज में हमें ले गए, वो 5.1.1 आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हमने ज्यादा उस पर वो नहीं अहमियत दी, फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ वो ले जाना चाहते हैं आपको। इसमें तो आपने खुद ही एक ये कटिंग लगाई है कि एस बाबर अकबर जो है वो सेक्रेटेरिएट पहुंच गए फॉर्म लेने के लिए। जी। ये तो खुद उनके जी जी वो आए तो हमने फॉर्म उनको देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम, दैट इज व्हाई वी शोन इट टू। और वोटर लिस्ट इलेक्शन के तरीकेकार की मालूमात हासिल करनी है, अकबर एस बाबर, ये जियो की आपने लगाई है ये। जी वो आ गए तो इसका मतलब वो उनको नॉमिनेशन पेपर्स अगर चाहिए थे वो ले लेते, वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं किया। वो तफरीक पे तो नहीं आए हो जी, वो कह रहे हैं कि मैं नॉमिनेशन पेपर लेने गया, मुझे नहीं दिया जी। अब हम कह रहे हैं दिया, हम कह रहे हैं तैयार कहने से तो क्या होता है ना, हम कह रहे हैं देखिए ना एक सेकंड ना, आपने जब दिया ना तो 50,000 रुपए की फीस का है, वो नहीं दी उन्होंने। नहीं देखिए ना उनको वो एलिजिबल ही नहीं है एज अ मेंबर, सो इसलिए वो ही डिडंट कम एंड ही डिडंट गिव, ही केम, ही शोड दिस। यहीं पे मेरा ख्याल है उनके वकील, आपके अपने भी उनके वकील साहब का अगर ये बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज ले रहे हैं ना। चेयरमैन साहब कुछ और कहते 50,000 रुपए कहाँ है आपकी? जब आप इलेक्शन लड़ने का फॉर्म ले अगर रहे हैं, रसीद आपने नहीं है जमा नहीं अकाउंट करा। में तो जमा हुए ना। पहली चीज तो ये सर इनका मेंबरशिप कार्ड किधर है? नहीं आप हमें दिखाएं कि आपने इसकी मेंबरशिप कैंसिल कब की। मेरे पेपर बुक जमा कराई थी, तमाम जो कागज कहे थे किधर है? मैंने इनको भी दीजिए। नहीं अभी तो ये नहीं, मेंबरशिप कैंसिल करने की बात नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं आपने फॉर्म लिया, 50,000 रुपए नहीं दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने कहा था तलब किया जाए रिकॉर्ड में ईसीपी की वीडियो फुटेज कॉपी दे दें जी। इनको हम सुनेंगे बाद में आपको देख जी, लेट हिम कंप्लीट द आर्ग्यूमेंट जी जी, ये जब तक देख लेंगे आप तसल्ली से बैठिए, आप नहीं बाद में देख लें मगर आप अपने कंक्लूड करें। मैं कर रहा हूँ। अब सर हमने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया सर, जो आपके सामने है एनेक्स 5 में, जो आपने पढ़ा, जिसमें हमने ये कहा कि जी अनाउंसमेंट से पढ़े, जब ये कहते हैं हमें क्या इलेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू होता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज आई, फिर आगे आने जाते सो ऑन सर फर्स्ट एनेक्स 1 देखें अगर तो 28 नवंबर 2023 इट वाज अनाउंस्ड इन द पब्लिक कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं। So 28th November 2023 was the first announcement कि ये intra-party elections होने, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact कि elections होने जा रहे हैं. And Annex 2 अगर आप देखें तो the next day
it was announced that chairman kaun hoga PTI ka nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko it was officially announced. Explaining in fact, complex I was topics can be challenging. Highlight the text you want to simplify and let Grammarly rewrite it. Grammarly makes your message clear so it's understood. Intra-party elections honge. Download it for free. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि जरूरत नहीं है कि आप टीवी मीडिया पे करें, लेकिन भी for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं. What's hurting me the most is I don't know why you left us in. Thereafter, सारा news में आया. Then the next on 29th on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या? ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस सैटरडे को इलेक्शन होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you Lord, letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. मैं बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे ये बात तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, हम अब न्यूज में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है. But I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I hereby nominate. कुछ तो दिखा देने. नहीं, इसका नॉमिनेशन नहीं होती सर. वो नॉमिनेशन पेपर पे जाके साइन करेंगे. He was a candidate which was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's much the founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी देखिए, खान साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब so these questions also arise. Tomorrow Mr. Imran Khan comes out and says, I never nominated him. Then a member, senator. चले वो that is an observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So Your Lordship, 29th को फिर the next page, Annex 5 is the 29th को the Federal Chief Election Commissioner who was appointed. He published a schedule, and the schedule जो है sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम. उसमें लगी हुई कौन से पेज पे? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं. वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं ठीक. वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो नहीं भी क्या कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो मगर फिर अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand Your Lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you are playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your Lordship, the next page is the Federal Election. कच्चा साहब कह रहे हैं नहीं जरूरत उसकी.
Federal Election Commission, the next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see. Mr. Niazullah Khan Niazi, is he an old PTI member? G. He is an old PTI member. When did he join PTI? आपसे नहीं पूछे ना, आप उनको बता दें प्लीज। 2009। तो देखिए ना, देखिए सब नए नए लोग आ रहे हैं ना, तो ये भी जरा आप नजर में रखें ना बात को। तो पुराने लोग कहाँ गए सारे आपके? मतलब ये भी तो आई डोंट नो, मतलब यू नो, देखिए you are, whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI, ठीक है? तो आप जैसे लोग होते तो कोई ज्यादा शक भी नहीं होता, अगर जब नए चेहरे आ जाएं एकदम से सारे, तो फिर इज इट, ये भी तो हो सकता है ना, लीड कैप्चर हम कहते हैं, पॉलिटिकल कैप्चर भी हो सकता है और ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ अ मेंबर्स राइट्स, नॉट टू कंसर्न बट जनरली यस, इलेक्शन हो गया खत्म, या कोई कंप्लेंट आया, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेंट ही ना करे, कोई मेंबर करे नहीं, तो हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कंप्लेंट करो, इलेक्शन कमीशन जाके उसके घर में घुसे। ये तो आपको बार बार कह रहे हैं भाई इलेक्शन करा लो, ठीक। That, I mean, I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. जी फरमाइए, ताकि your lordship at least get satisfied कि एक इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, and not going into the nitty-gritty of it. Now your lordship, उसके बाद अब question arose के nomination papers. So what was done was, nomination papers की copies हैं, so nomination forms की जो, अगर from page 34 पे चले जाएं, 34, तो these were the forms that were available. It's simple one pager, एक फॉर्मेट लगाया उसका, I so and so CNIC नंबर डालना होता है, स्टैंडिंग मेंबर ऑफ इतना, प्रपोज द नेम ऑफ सो एंड सो, एंड एक उसका सेकेंडर हो जाएगा, प्रपोजर हो जाएगा, दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म। एंड देन उसके साथ नेक्स्ट पेज अगर आप देखें, पेज 35 देखें, तो ये पेज 35 पे आपको नजर आएगा कि एक पैनल फॉर्म में इस तरह पे साइन होके आता है, ऑल द पैनलिस्ट साइन। सो योर लॉर्डशिप कैन सी कि ये जो आपने 34 पे दिखाया है, ये किसका है? उमर अयूब खान का। जी, दिस इज हिज पैनल। उमर अयूब खान का नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुआ है 1 December 2023 को, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. और उसके साथ पेज 35 पे सर, because it's a panel election, तो उसने अपना पैनल भी दे दिया। Your Lordship can see the panel that has been given. दूसरे पैनल के पेपर का है जी, दूसरा पैनल, दूसरा कोई नहीं आया, no other panel came like this. So this was one panel that came only. ये तो टोटल 15 आदमी का पैनल है जी, ये जीता है, ये जीता है। तो ये जो आपके वो आपने जो लिस्ट भेजी है वहाँ पे पूरे सूबों के मुताबिक उसका टोटल नंबर 91 है, जो आपके ऑफिस वो अलग है सर, हर पैनल अलग से आया, दिस इज द फॉर्मेट। 91 persons is extremely inappropriate. Very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. तो भी हाफ एन आवर ब्रेक, लंच ब्रेक करने? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ, हाफ एन आवर, टाइम बता दीजिए, हाफ एन आवर, थैंक यू। सो थैंक यू सर।